Hello students, welcome to Preparation UGC NET JRF Code 55. This is the fourth class of the 25 days 25 practice session series. The topic for today's class is Payment of Gratuity Act 1972. Let's begin our today's class. First of all, we will do the quick revision of the following sections. सेक्शन 2A इज़ एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट. ये सभी सेक्शंस आप लोगों को याद करने, सभी नहीं मतलब जो इम्पोर्टेंट सेक्शंस है वो आप लोग याद कर लीजिएगा बाई हार्ट, क्योंकि अब एग्जामिनर जो होता है वो हम लोगों से पूछने लगा है मैच द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्वेश्चन में. एक तरफ सेक्शन दे देता है, एक तरफ उनकी डेफिनेशंस दे देता है. तो इसीलिए आप लोगों को हर एक एक्ट के जो भी इम्पोर्टेंट सेक्शंस हैं वो आप लोग याद कर लीजिएगा. सेक्शन 2B इज़ कम्प्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस. Section 2E is employee, 2F employer, 2H is family, 2Q is retirement, 2R is superannuation, 2S is wages. Section 3 is controlling authority, very important. Section 4 is payment of gratuity, important. Section 4A compulsory insurance, again important. Section 5 power to exempt, not much important. Section 6 is nomination, important. Section 7 is determination of amount of gratuity. Section 8 recovery of gratuity, important. Section 9 penalties. Section 10 exemption of employer from liability in certain cases. इस बार जून के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन इस सेक्शन से पूछा गया था, एक क्वेश्चन अगर आप लोगों को याद हो तो. सेक्शन 11 इज़ कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंसेस एंड सेक्शन 5 इज़ पावर टू मेक रूल्स. स्पेलिंग इज रॉन्ग, इट्स मस्ट बी रूल्स. Okay, so let's begin our today's class of MCQs. The first question is, when was the Payment of Gratuity Act was passed in India? The answer is 1972. For a person employed in a seasonal establishment, what is the rate of gratuity payable under this act? Please answer. It's 7 days wages for each season. The next question is, gratuity shall be payable to the employee, nominee of the employee, or legal hire of the employee? The answer for this question is any of the above. Here it should be deceased, okay, not ceased. Any person aggrieved by an order of whom may prefer an appeal to? Please answer. Very good. Any person aggrieved by an order of the controlling authority may prefer an appeal to appropriate government. Next question. What is the qualifying service to claim gratuity? It's 5 years. Next question. The employer shall arrange to pay the amount of gratuity within how many days from the date it becomes payable? It's 30 days. Next is appeal on the decision of controlling authority should be preferred within how many days from the date of the order? It's 60 days. Next question. The formula for calculating gratuity is, this question is very important. What is the formula? Its gratuity is equal to monthly salary divided by 26 into 15 into number of years of service. Which section deals with the determination of the amount of gratuity? Determination of the amount of gratuity, section 7. जैसे इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकते हैं, तो इसीलिए आप लोगों को सेक्शंस भी याद करने हैं. The definition of wages under the Payment of Gratuity Act 1972 includes
dearness allowance. It does not include house rent, overtime and bonus. Match the following. सी इस टाइप का भी क्वेश्चन आ सकता है आप लोगों के एग्जाम में. सेक्शन 3, सेक्शन 4, सेक्शन 4A एंड सेक्शन 8. अगर आप लोगों को इसमें से एक का भी सेक्शन पता है तो आप लोग आंसर मार्क कर सकते हैं. सेक्शन 4A हमारा होता है कंपलसरी इंश्योरेंस. सेक्शन 8 होता है हमारा रिकवरी ऑफ ग्रेजुएटी. सेक्शन 3 है हमारा कंट्रोलिंग अथॉरिटी. सेक्शन 4 है हमारा पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी. सो इसका आंसर हो जाएगा बी, 1 का बी. तो हमारा एक ही ऑप्शन में आया जो कि है हमारा बी ऑप्शन. Next question. Okay, this is all for today's class. I hope you find this session valuable and interesting. So please, for more updates, please subscribe to this channel, like and share. And if you have any doubt relating to the Payment of Gratuity Act 1972, you can do comment in the comment section. Thank you so much, students. Take care. Bye bye.